Good evening, viewers. You're watching Sansad TV with me, Rashika. This is House Highlights, where we get you today's updates from both houses of the Parliament. Let's begin with the headlines of the day. Prime Minister Modi replies to motion of thanks debate in Rajya Sabha, asserts that his government is driven by the aspiration and expectations of the people and taking up issues with utmost commitment to resolve them permanently. Rajya Sabha passes motion of thanks on the President's address by voice vote, negates some amendments moved by opposition parties. And discussion on the General Budget 2023-24 begins in Lok Sabha. Members raise various issues. Beginning with the upper house, Prime Minister Narendra Modi replied to the motion of thanks on President Draupadi Murmu's address in Rajya Sabha on Thursday. He asserted that his government is driven by the aspirations and expectations of the people, and it is taking up issues with utmost commitment to resolve them permanently. हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहाँ गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था। यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। Referring to Congress President Mallikarjun Kharge's remarks that they have laid a strong foundation in 60 years, the Prime Minister alleged that Congress only dug holes during their tenure. कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। The Prime Minister listed the steps taken by his government for the welfare of every section of the society. मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए।
हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। Expressing displeasure over the conduct of opposition members in the House, Prime Minister Modi said a lotus will bloom no matter how much mud is thrown on it. कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। The Prime Minister added that attempts were made to show Indian scientists in a bad light who developed indigenous COVID vaccines. हमने देखा है कोविड के काल में कोविन प्लेटफॉर्म 200 करोड़ वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट कोविन का आपके मोबाइल पर विदिन ए सेकंड आ जाता है। लेकिन दुनिया को अचंभा तब हुआ कि भारत अपनी वैक्सीन लेकर के आ गया है कोविड में। दुनिया के लोग अपनी वैक्सीन, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा मार्केट था, बेचने के लिए भांति भांति के प्रेशर करते थे, आर्टिकल लिखे जाते थे, टीवी में इंटरव्यू दिए जाते थे, सेमिनार किए जाते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले। और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्वीकृति मिली है ऐसी वैक्सीन से, मेरे देशवासियों का ही नहीं 150 देशों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने का काम। The Prime Minister also highlighted the steps taken for the empowerment of women. आदरणीय सभापति जी, हमें
बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े, वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े, उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें। हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है, उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुल करके सुने, ताकि आगे जाकर ये बताने में उनको सुविधा होगी। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई और इसके लिए प्रेगनेंसी के समय महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाए, ताकि उसको पोषण से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य को भी लाभ हो। During the Prime Minister's speech, opposition members from the Congress, AAP, BRS, TMC, DMK raised slogans in the well of the House. After the speech, members from Congress, TMC, NCP and others staged a walkout. The Rajya Sabha on Thursday passed by voice vote the motion of thanks on the President's address after Prime Minister Narendra Modi's reply. Some amendments moved by opposition parties were negated. Soon after Rajya Sabha began the listed business of the day, Chairman Jagdeep Dhankar disallowed notices under Rule 267. Honorable members, I have received 2 notices under Rule 267 from Dr. K. Keshav Rao and Sri Sanjay Singh. They have sought permission for suspension of the listed business. I do not find the notices in conformity with the directions already imparted. Of opposition, Mallikarjun Kharge and Congress MPs objected to Chairman Jagdeep Dhankar expunging words from his speech in the House a day earlier, saying he did not use any unparliamentary phrase. Chairman Jagdeep Dhankar said only parts of the LOP's Wednesday speech were expunged under Rule 261 of the Parliament. Honorable members, I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. I have one second. Sir, please. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained. Rajya Sabha proceedings resumed after a brief interruption. During 0 hour, members across party lines voiced concern on various issues relating to their respective constituencies. 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति है, उनकी संपत्ति से कोई भेद नहीं है। दिक्कत यह है कि 50% के पास सिर्फ 3% है। जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी सर, हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के एक इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था करें ताकि आप हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हम सार्थक पहलकदमियां कर सकें। I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honorable
Prime Minister to include the long pending demand of Lepcha people to include their language in 8th schedule. This will ensure the preservation and growth of the rich language. When Rajya Sabha resumed at 4:30 p.m., ruling party members continued their protest against Congress MP Shakti Singh Gohil being permitted to speak on the union budget by Chairman Jagdeep Dhankar. They said that Gohil did not speak when he was first asked to do so. The chairman requested the leader of the House and opposition leaders to sort out the issues in his chamber. Soon after the proceedings resumed again, the upper house had to be adjourned till 11 a.m. on Friday due to the continuing protests. Time for a short break in the bulletin. On the other side, news about the proceedings of the lower house. Welcome back to House Highlights. Let us take a look at some key moments in Lok Sabha now. Lok Sabha took up the general discussion on Union Budget 2023-24 on Thursday. Criticizing the budget, TMC MP Saugata Ray said it lacked vision for the future. Poverty, inequality, inflation, or equity. Unfortunate that the Finance Minister budget speech does not mention the words unemployment, poverty, inequality, inflation, or equity anywhere in the speech. So even if it is beautifully balanced, it is that of an accountant. This budget has no vision about the future, and it is not futuristic, but opportunistic. Member B. Mehta praised the issue of free food grain distribution. He mentioned that the ration records have not been updated since 2011. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011. Taking part in the discussion on the general budget, Congress party member from Kerala, M.K. Raghavan, questioned the government's intention in reducing the budget of Manrega. He said slashing the budget for the rural scheme to 60,000 crore rupees could prove disastrous. What happened Manrega in this budget? Sir, Madam Minister is really neglecting the rural population. This year's budget clearly establishes this. The contribution to the Manrega
was monumentally reduced to 60,000 crores. So what is the result? By slashing funds to Manrega, government is bringing in a disaster into lives of our common men. This world's largest social security legislation is the brainchild of our government in 2005, led by UPA. Sir, but unfortunately, we feel sad that Manrega is being totally neglected by the union government. My suggestion is that the minimum wages under Manrega must be increased at least rupees 400 per day. BJP member from MP Sudhir Gupta appreciated the decision to set up 3 medical colleges in his constituency. हम आश्चर्यचकित है कि कैसा स्नेह होता है सरकारों का। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय सभापति जी मेडिकल कॉलेज आए, कितना? मेरे यहाँ 3 जिला मुख्यालय हैं, तीनों जिला मुख्यालय पर 3 मेडिकल कॉलेज, एक बनकर चालू हो गया, दोनों इतनी हाइट पर आ गए कि मनसुख भाई यहाँ बैठे हैं, मांडविया जी मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दूंगा, नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जी थे उनको भी दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद बधाई दूंगा। कमाल कर दिया साहब। मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, हम सोच नहीं सकते थे, अभिभूत हैं हम तो। A. Rajya of the DMK said the government has made no sincere effort to enhance the quality of primary and secondary education, which affects the SCs and the STs more. You enhance the allocation of higher education. That does not mean this government is giving due attention for the primary education, which is clubbed with the scheduled caste, scheduled tribe, and gullible masses of this country. Still, budget is very silent on SC, ST, and OBC for primary and higher secondary education. Sir, promise that has been made for the recruitment of 38,000 teachers in Yegalaiva schools. I appreciate tribal schools. But not even a single new school for tribals has not been opened. You are promising for 5 years 38,000 teachers to be recruited. But where is the no school? Is it not a mockery? TDP's Jaidev Galla asked the government to keep its promises made to Andhra Pradesh. AP has been receiving empty promises and scant allocations since the bifurcation of the state in 2014. In this budget, the finance minister has given 5,300 crores to the Upper Bhadra National Irrigation Project in Karnataka, but nothing has been given for Polavaram, which is a national project and has been pending for so many years. This is the first disappointment for AP, sir. I would not say much on Polavaram, since the Government of India and the Jal Shakti Ministry knows every single detail of it. I would only request the Finance Minister for approving the second revised cost estimates of 55,657 crores and release the pending dues to Andhra Pradesh, which they've already spent, sir. Jammu and Kashmir National Conference member raised the issue of decrease in allocation of midday meal and other schemes. एक तिहाई आबादी है हमारे मुल्क में बच्चों की, 33% हमारी कुल आबादी के बच्चे हैं और उसी सेक्टर में चाइल्ड वेलफेयर में कोई मिड डे मील्स में 43% की कमी की गई है जो बजटरी प्रपोजल्स हैं। ICDS में भी हम देख रहे हैं कोई 40% के करीब कमी की गई है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जब आप जो वीकर सेक्शंस हैं, जब आप वो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं तो उस मामले में इतनी बड़ी कटौती तो काबिल कबूल नहीं है। जब एग्रीकल्चर में मिल मिला के 5% की कटौती की गई है और जनाब जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है उसमें तो बिल्कुल ही हैरान कुन तरीके तक कटौती की गई है। MSP का कोई जिक्र ही नहीं है। BJP member from Fatehpur Sikri, UP, mentioned the need for all to work for the progress of natural farming. तो आज प्राकृतिक खेती के लिए 3 करोड़ किसानों तक जाने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर इस सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी और देश के नागरिक भी मिलकर हम लोग प्राकृतिक खेती के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ये सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। Shiromani Akali Dal's Harsimrat Kaur Badal alleged the government was insensitive towards the farming community.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना budget reduced by 12%. PM Kisan reduced by 13%. Manrega, the lowest ever in 5 years, reduced by 18%. Krishi Vikas Yojana reduced by 31%. Krishi Niti Yojana reduced by 2% or so. Price support और market intervention का 1500 करोड़ को काट के 1 करोड़ कर दिया और market intervention PM आशा को 1 करोड़ काट के 1 लाख कर दिया। तो सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किसान, मजदूर और गरीब के साथ भद्दा मजाक किया है। During question hour in the lower house, Congress MP Shashi Tharoor sought clarification on the implementation of projects under the Smart City program. Minister for Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri, replied that almost 100 cities selected under the initiative are progressing fairly well, with some facing a slowdown in work. Fairly well, some due to the COVID period. First, how do you explain these discrepancies and the unevenness in the implementation of the smart city projects? Prime Minister. Secondly, how do you account for the delays? If there are some cities where there are major delays, there must be some common factors that your ministry has studied. Almost all 100 cities are doing fairly well. Some due to the COVID period, there was a slowdown or there were local factors. Member Dayanidhi Maran sought a response on the state of highways in Tamil Nadu and the status of the Chennai-Bangalore Expressway. Union Transport Minister Nitin Gadkari replied that the centre needs the state government's cooperation to undertake and complete projects. Recently, I had an opportunity to travel to Ranipet from Chennai. The roads are pathetic. So all the land has been given by the state government. The expansion work is all lands, but your contractors have gone to the court. For the last 4 years, sir, the Chennai-Bangalore highway is in a mess. The problem is not with my department. Here I need your cooperation for that. Aggregate is not available. Sometimes the permission given for 3 months, after 3 months again to get new permission is a difficult task. Then there is no permission for mining. Also there is a big problem. Then how we can make the roads? The problem is land acquisition is a problem. Environment, forest clearance is not there. Still, Bangalore side express highway is really, the progress is very good. That's all in today's bulletin. Keep watching Sansad TV for all the updates of the budget session. Good night, everyone.